हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन म्यूचुअल फंड्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। ओके, सो गाइस, आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वेरी हाई रिस्क इक्विटी फ्लेक्सी कैप 23.11%. दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो गाइज, आप देख सकते हैं NAV नेट एसेट वैल्यू 49.99 11th March 2022 and NAV 51.01 3rd Jan 2023 and 61.03 26 July 2023, okay, and 71.21 25th Jan 2024, okay. NAV 16/5 2024 74.80, rating 5 star, minimum SIP amount 1000, fund size 55,034 करोड़, 55 करोड़ का ये फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। सो गाइज, यहाँ से आप रेटिंग कैलकुलेटर भी सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, 3 years एंड 5 years का। ओके, होल्डिंग 85 कंपनीज, टॉप 10 होल्डिंग्स बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड, SL टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, ओके, एक्सेट्रा। ओके, रिटर्न एंड रैंकिंग फंड रिटर्न्स। So guys, first year 41.1, third year 23 point, and 5 year 24, and all 20.6. okay, rank in category 10, 9 and 1. okay, similar funds, equity flexi cap funds, JM flexi cap fund direct plan growth, HDFC flexi cap, Parag Parikh Flexi Cap Fund, and Franklin India Flexi Cap Fund, and DSP Flexi Cap Fund. Okay, expense ratio and exit load tax. Expense ratio 0.57%, inclusive of GST. Exit load for units about 10% of the investment exit load of 2%. It if redeemed within 365 days, and 1% if redeemed after 365 days, but on or before the 730 days. okay, and stamp duty on investment 0.005%, and from July 1st 2020. Tax implications: returns are taxes at 15% if you redeem to before 1 year. After 1 year, you are required to pay LTCG tax of 10% on returns on rupees 1 lakh plus in a financial year. okay, okay, fund management, Raju Thakkar, present 2013, and Raunak Onkar, present, and RJ Raj Mehta, present, and Rukun Tarachandani, present, and Mansi Kariya, present. Mansi Kariya, Mrs. Kariya, has done BCom, MS Finance and CFA. okay, prior to joining the PPFAS AMC, she has a work with Incense and Jhakasa Investment Research. okay, Parag Parikh Flexi Cap direct growth. okay, so guys,
fund house and investment objective. Rank total asset hashtag 23 in India. Total asset under management 61,943 crore. Date of incorporation 10th October 2012. And investment objective, the scheme has to achieve the long-term capital appreciations by investing primarily in equity and equity related instruments. Okay. Okay, so guys, Parag Parikh Flexi Cap Fund, direct growth, very high risk, 23.11%, 3-year annualized. This is a technical chart. Rating 5, NAV 74.80, 16/5/2024. Net asset value, minimum SIP 1000, fund size 55,034 crore. ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।